before we begin today's class, I am taking this mindset check, right? Ki, how are you feeling about your prep right now? It's a good time to do our mindset check ki, because we are somewhere midway our prep. है ना, हमने काफी मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट किया है. थ्योरी पार्ट ऑफ वीआरसी तो ये सेकंड लास्ट है. इसके बाद बस लास्ट तुम्हारा आएगा पैरा कंप्लीशन एंड देन वी आर डन विद वीआरसी सिलेबस. ठीक है, देन वी विल बी सॉल्विंग. तो वो हो गया. वी आर वी हैव एंडेड अरिथमेटिक अलजेब्रा इन कॉन्स आल्सो. तो वी आर काफी हद तक हम उसमें चले गए, राइट? This is a very good time to do mindset check because this is a time when we are combining learning new chapters with also revising previous chapters, right? So how it is going? So abhi dekho, I have different kinds of responses and different kind of responses are touching upon different sort of things, okay? And all of you have been studying almost the same things, right? You have weekly targets, you're studying from me, you have same class schedule. तो अभी भी सबका mindset देखो अलग अलग है. अब one person says कि this week was a little slow, but hopeful that I'll cover on the weekend. So there's a hopeful ambition here, right? Now, next response says कि I was feeling good till yesterday, but didn't perform well in the test. So फिर whole day like spoiled. Then next is कि most days are good, but some days you can't focus, है ना? And then it's also like you felt energetic in the beginning, and then once you're not able to complete the task, you feel disappointed. So these are all combination of like different responses to same situations. और देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. Whenever you're preparing for a competitive exam for a really long time, it's not a short period thing. कि तुमको पता है कि मुझे 1 महीना करना है, हो गया. 20 दिन करना है तो हो गया. तो अगर हमें इतना short period होता तो it is very easy to maintain the same momentum, right? Very easy to maintain the same momentum throughout. But when you're preparing for something over a year, for 6 months, 8 months, every day is not going to be same. There'll be some good days, some bad days. Some days when you are very focused, some days when you're not. Some days when you make silly mistakes, some days when you crack an amazingly difficult set, right? There'll be weeks when weekly targets are met, there'll be weeks when weekly targets are not met and you have a backlog. Whole point is, what matters in all of this is showing up. That no matter what, every day I show up when it is, and I have said this multiple times, right? मेरी कम capacity है, ज़्यादा capacity है आज. मैं उस हिसाब से करती हूँ, but I show up. I show up for the day and I do whatever I can do. And I work off. So that matters a lot. तो जो लोगों को लगता है ना, मैंने अपने Instagram पे, not Instagram actually, there was a time when I was following a very strict diet and a fitness regime. ठीक है, अभी तो मैं फिर से I put on, but yeah, मेरा चलते रहता है, ठीक है. But there was this time, okay, and I had this dietitian, और मेरा dietitian had a habit of broadcasting every morning. He would broadcast one motivational message. Or obviously those are forwards from somewhere, but I don't know why I like his forwards. Like you never like anybody's forwards, but his forwards were actually good. And you know, starting of the day मुझे अच्छा feel होता था वो देख के. तो few things stuck by me, right? तो उसमें से एक चीज थी which was basically telling like what people think consistency is. So they जैसे 5-7 ऐसे draw करे थे Monday, Tuesday, Wednesday के लिए. कि what do you think it is? Your expectation, right? This is what you think. And in reality what consistency actually looks like, है ना? तो इसमें obviously ये पूरा ऐसे colored था, या मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, right? तो ऐसे पूरा colored था कि people think consistency is this, कि every day I am at full capacity, है ना? But then reality is कि some days you are full, some days you are half, some days you are barely there, some days you are full again. So this is consistency. Whole point being that you showed up every day. So if you are attending all the classes, if you are trying to do something, कुछ पढ़ाई आधा घंटा क्यों ना on the bad days, and showing up, and you are finishing targets, weekly targets इसीलिए दिए है ना, तो तुमको motivated feel होते रहेगा और वही करते रहना है and ज्यादा सोचना नहीं है उसके beyond. ठीक है, हम हमेशा एक माइलस्टोन हम जब अटेन करते हैं ना, तो वो माइलस्टोन पे आके मैं तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्लास लेती हूँ या मैं तुमसे चेक पॉइंट लेती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उसके बीच का पीरियड इज मंडे कि बस करते जाना है ना. नोबडी फील्स लाइक गोइंग टू ऑफिस बट वी डू गो. कॉलेज जाने का मन नहीं है बट वी गो. एग्जाम के लिए पढ़ने का किसका मन करता है? नहीं, बट वी डू इट. तो वैसे ही कैट एग्जाम के टारगेट्स को लेना है, टारगेट्स वीकली टारगेट्स है शायद, उसको भी उस तरीके से लेना है कि करने का तो मन नहीं है बट मैं करूंगी बिकॉज यही करने से मेरा होगा, उसके अलावा तो नहीं होगा. ठीक है, I'm really happy to see सबका ये, all of your realizations and feelings are valid. They are different dimensions of the same thing, but understand it's very normal because it is a long journey. Even now the exam is 6 months ahead, 5.5 months ahead, and उतने लंबे duration में every day is not going to be the same. ठीक है, it is going to be up down up down up down up down up down, but the whole point is it is existing. The preparation is existing and I'm showing up every day. So ensure just that is what I'll say for now. ये मुझे बस दो ही चीजें चाहिए तुमसे कि every day you show up, कि मैं कुछ भी करूँ, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करूँ. जिस दिन एक्सट्रीम केस हो गया उस दिन भी मैं 2 क्वेश्चंस तो भी सॉल्व कर रही हूँ.
राइट, एक आरसी तो सॉल्व कर रही हूँ, एक डीएलआर सेट सॉल्व कर रही हूँ, या 4-5 में कौन सी क्वेश्चन तो कर ही रही हूँ ऑन इवन ऑन द फर्स्ट डे। इतना तो मेंश्योर करो, और वीकली कुछ भी करके वो वीक का टारगेट फिनिश कर दो। कुछ भी हो जाए, वीक का टारगेट तो मुझे फिनिश करना ही है, कितना भी मेरा मन ना करे। ये दो चीजें इंश्योर अगर तुम कर लोगे तो यार 90% देयर, नॉट इवन हाफ वे, है ना? तो दैट इज दैट। ऑलराइट, कूल देन, वेरी नाइस, गुड टू नो, हैप्पी टू सी एवरीबॉडी स्टेट ऑफ माइंड। आज का चैप्टर की बात करती हूँ, है ना? टुडेज इज ऑड वन आउट। ठीक है, अब ऑड वन आउट्स बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ट्रिकी पार्ट ऑफ बीए, है ना? हमने पैराजम्बल्स पे बिल्ड करेंगे हम इसको। ऑड वन आउट क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हाट आर ऑड वन आउट क्वेश्चंस? ऑड वन आउट क्वेश्चंस आर बेसिकली they give you 5 sentences and then they say 4 sentences belong to one paragraph. One of the sentences does not belong to that paragraph. You have to identify it, right? तो उसके पहले हम बेसिक्स ऑफ वर्बल एबिलिटी का रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक सीखे थे, राइट? सम टूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, सो दैट इज गोइंग टू होल्ड ट्रू। जो हमने पैराजम्बल्स के टूल्स थे वो सेम ऑड वन आउट में और वो सेम पैरा कंप्लीशन में काम में आएंगे। बेस ये तीनों का, तीनों वीए का बेस इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है? नो मैटर विच ऑफ द वीए क्वेश्चन इट इज। So what did we learn in last class? Batao, who all remembers what are the basics that we learned? First thing we learned was tunneling. Do you remember that? If there's tunnel in or there's tunnel out. In the way you have conversation, broad to narrow, yeah, narrow to broad. Secondly, we learned reference chains. Remember? We learned that there is something called as a reference chain wherein this, that करके तुम एक sentence को, किसी idea को refer करके दूसरा sentence लिखते हो, right? Then we talked about the word families. हमने पैराफ्रेजिंग सीखा था एक्चुअली, थर्ड नंबर पे पैराफ्रेजिंग था। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग इज व्हेन यू यूज एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, रीराइटिंग द सेम थिंग इन इजियर लैंग्वेज टू से द सेम थिंग। सो कई बार पैराग्राफ में क्या होता है कि सेम बात बार बार कही जाती है, सिमिलर टू हाउ आई टीच यू इन द क्लास, राइट? सेम थिंग टोल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश एग्जाम्पल लेके। तो लॉट ऑफ पैराफ्रेजिंग हैपेंस इन द सेंटेंस। देन लास्टली वाज योर डायरेक्शन वर्ड्स, राइट? व्हाट वर द डायरेक्शन वर्ड्स? देयर वर 3 word families: and, but, and therefore. क्या क्या करते हैं ये तीनों? and continues, है ना? this continues the conversation, ये contrast और ये conclude, है ना? ये हमने सीखा था। So these are 4 primarily tools or basics of VA that are going to help you everywhere. तुम्हारे सारे VA के paragraphs एक broad to narrow construct में होंगे, wherein something broad is introduced and then you go on to give specific explanation to it. All of that will be connected via reference chain, wherein they mention something broad and then refer to something and then create next sentence and refer to something and create third sentence, then refer to something and create fourth sentence. इस तरीके से वो arrange होंगे हमेशा, and there will be direction words that will help you navigate to the direction of the passage also. तो ये हमारा बेस हमें याद रखना है, ठीक है? एंड इसी के बेसिस पे अभी हमारा ऑड वन आउट बनेगा। तो ऑड वन आउट में क्या होता है ना, जो भी ऑड वन आउट क्वेश्चंस होता है उसका ट्रिक क्या है ना, कि दे गिव यू 4 sentences, 5 sentences overall, right? And they say that out of these 5 sentences, 4 sentences belong to same para, while 1 sentence belongs to other paragraph, मतलब does not belong to that para, है ना? यही उन्होंने देके रखा है तुमको। So more than finding the odd one out, तुम्हारा effort in odd one out should be to construct a parajumble. Most odd one out questions can be solved very easily if you ace parajumbles, क्योंकि तुमने पैराजम्बल से 4 सेंटेंसेस कनेक्ट करके, जो भी पैराजम्बल के रूल्स थे उससे 4 सेंटेंसेस कनेक्ट कर दिए, और फिर एक सेंटेंस कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, वो अपने आप ऑड वन आउट हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन VRC, इफ यू हैव नोटिस्ड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज ऑलवेज हेल्प देन मेथड ऑफ सिलेक्शन, राइट? मतलब इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग व्हाट इज द राइट आंसर इन RCs, वी लर्न हाउ टू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स, राइट? वैसे ही ऑड वन आउट में we are not going to select which one is the answer for odd one out. We are going to be like, which of the 4 sentences cannot be odd because they form a sentence. So you eliminate those 4 and then bacha hua. So throughout VRC, you will notice this pattern, that method of elimination works more than method of selection. That you are like, these cannot be answers, isko baaju mein rakho. And then you're like, okay, these can be the answers, ab isko analyze now karte hain. So this is what odd one out is going to be. So we are going to build it using the parajumble ka techniques only. So what's going to happen is, you will be given in odd one outs, जो भी तुम्हें 5 sentences दिए, मैं अभी बात कर रही थी, right? उसमें से हमने बोला 4 sentences belong to one para, and 1 sentence doesn't. So how do you spot it? What are the ways to spot it? See, what all can be possibility? Possibility is topic ही different है,
ये 4 सेंटेंस एनिमल्स के बारे में बात करते हैं और एक सेंटेंस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं समझ गया कि भाई ये तो एनिमल्स के बारे में, ये प्लांट के बारे में, तो प्लांट वाला गलत है, राइट? सेकेंड second is what they can do is they can use different tone. Different language, different tone. That it feels like even if the topic is same, it's different people who have written it. So it doesn't feel like it belongs to the same, it is not a part of same assignment or same article. बच्चा लिख रहा था, अचानक मम्मी ने एक सेंटेंस लिख दिया है, ऐसे टाइप का कुछ फीलिंग, राइट? So there's a different language, different tone used, and then that is how we can spot this is a odd sentence. But अभी ये कैट एग्जाम है, इतने इजी एरर्स तो वो देंगे नहीं। अगर उन्होंने टॉपिक डिफरेंट कर दिया, उन्होंने टोन पर्पस सब अलग कर दिया, तो वो इजी टू स्पॉट हो गया। तो इतना इजी तो वो रखेंगे नहीं। So what do they do is instead they are like no, we will use same author ताकि द लैंग्वेज इज सेम। कभी कभी उसको और डिफिकल्ट करने के लिए वी विल यूज सेम आर्टिकल ऑल्सो, एक ही आर्टिकल से, ताकि तुम्हारा टॉपिक भी सेम हो जाए। सेम ऑथर का सेम आर्टिकल लिया है, एक ऑथर का एक आर्टिकल लिया, बस मैंने क्या कर दिया, मैंने डिफरेंट पैराग्राफ से ले लिया। सो इट्स लाइक अ 5 पैराग्राफ आर्टिकल एंड आई टेक 4 sentences from one paragraph and I take 5th sentence from the next paragraph, right? And 2 paragraphs are associated with each other, तो बच्चे पहचान नहीं पाएंगे। That is what they try to create and that is how they make the question complicated. Then how can we be smart and how do we find out? By understanding something called as dimension of conversation. ये समझना बहुत जरूरी। What is dimension of conversation? Do you remember when we learned author's tone and purpose? तब मैंने तुम्हें एक example दिया था कि if the topic is democracy, right? So topic is democracy and there are 4 sentences talking about let's say India as a democracy, right? Where probably from independence period or during the modern period, how democracy evolved in the country, how the constitution was made, how democratic principles were, adapted. So इस तरीके से एक टॉपिक आ रहा है, right? And अचानक then there is one sentence that talks about democracy as a form of governance, right? So इसमें it feels like yes, it is about democracy, the topic is same, yes, it is the same author and everything. But the whole point is, all these 4 were talking about India and democracy and development of democracy as a principle in India, or India adapting to democratic values, or however it has evolved. While here we are talking about democracy as a form of government, right? So then this is called a different dimension. That all 4 are covering a different dimension, while this is covering another dimension. Let's say we are talking about COVID pandemic, right? And 4 sentences talk about how India managed healthcare during pandemic, and 1 sentence talks about the economic difficulties faced by people or socio-economic impact of pandemic on India's economy. तो अलग अलग डायमेंशन हो गए ना। लग रहा है कि द टॉपिक इज अबाउट पैंडेमिक, बट द अदर 4 आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर में व्हाट हैपेंड एंड हाउ इंडिया मैनेज द पैंडेमिक का क्राइसिस, वेल वन पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम इट हैड ऑन इंडियाज इकोनॉमी, right? This is what dimension of conversation is. So what do? They end up taking the article from the same, they take a paragraph from the same article and everything, they just change the dimension of conversation. ठीक है, हमने स्कूल में जब एसेज लिखना किया था, हमें सिखाया था, यू मस्ट रिमेंबर, अगर तुम्हारी थोड़ी हाफ डिसेंट भी इंग्लिश टीचर होगी तो तुमको ये सवाल आता होगा कि ऐसे में पैराग्राफ कैसे चेंज करते हैं, राइट? 6th 7th में ये सवाल आता है अपने मन में कि हाउ, व्हेन आर यू सपोज्ड टू चेंज द पैराग्राफ इन द एसे, when are you supposed to change the paragraph? And the teacher tells you that once you finish a certain kind of topic, you change a paragraph to start different dimension of that topic, right? Let's say हम letter writing भी कर रहे हैं, letter writing में we are writing an informal letter to a long distance friend, तो फिर हम क्या करते थे, we would write a letter and we would tell, let's say कि starting में it is greetings कि how are you, हिंदी में लिखते थे, याद है? हिंदी mostly, those who had Hindi, कि कि how are you and how your day was, I hope it's fine and well, and then you talk about yourself कि what did you do and how have you been, right? तो तुम यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करते हो, because first you talked about them and then you start talking about yourself. So then when you start talking about yourself, you might start telling कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, मेरे घर वाले लोग ऐसे ऐसे हैं, ठीक है? मैंने फिर then this is general information. Then you start talking about a specific incident कि मैं जुलाई महीने में आगरा घूमने गया था, वहां पे मैंने ताजमहल देखा, so on and so forth. So then again you will, because you're talking about a specific incident, you'll again change the paragraph. So whole point is the same write-up, but the dimension of the topic, that the topic at the end is you are telling about yourself and well-being, your well-being and what are you doing. But every time you're talking about something new, you'll end up changing a paragraph. That is basically what we call the dimension of conversation. So odd one outs are primarily, this is where the odd one out lies, where everything seems to be same topic, same tone, same article, same everything. But that slight dimension of conversation will be a bit different. Do we understand this? Yes? Do we understand what is the dimension of conversation? Yes, good, very good. So, abhi going ahead,
we are going to learn odd one out in more depth, stepwise method to solve it, what is the framework to solve it, and so on and so forth. But right now, we are going to have this takeaway that we are going to learn how to spot the different dimension of conversation to find odd one out. All right, cool. Now let us move ahead. Okay. Let's start with learning the odd framework. Odd one out ka the odd framework. What does the odd framework stand for? This is a stepwise process to find odd one out. Okay, देखो, first half, first approach, or you call it first approach, will always be the parajumble approach. The primary way to solve odd one out is parajumble approach. What does it mean? What do I mean by it? That first you find independent sentence, then you form pairs, and through reference, change, and direction words, and then lastly you basically do the tunneling. And this is how you're able to arrange 4 sentences in a para, right? Now, once you have done that, whichever sentence is left will be your odd one out. That will always be the primary way to solve odd one outs. But then what can be the secondary way? अगर हम सिर्फ odd one out specific देखें तो the second way to solve odd one out is by following this ODD framework. What is O? We have to observe the topic. Topic as in the subject of conversation. Democracy की बात हो रही है, impact of COVID की बात हो रही है. Not the dimension. This is a topic. What is the subject of conversation? Once you are able to find the topic, you have to spot the dimension of conversation. What dimension are we talking about? Let's say if the topic is democracy, are we analyzing democracy and talking the positives and negatives? Are we talking about India as democracy? Are we talking about democracy as an overall principle of the way of government? Are we talking about democracy and how in different ways it is adapted by different countries across the world? What dimension are we covering? वो dimension हमें detect करना है. और अगर वो dimension से जहां पे भी different dimension आया, वो तुम्हारा odd one out. Right? So this is a secondary way. This is how you directly end up solving odd one out, right? You're not beating around the bush. You're not solving for parajumble. You're not arranging 4 sentences. You're directly hitting what is a wrong sentence. But getting here requires, अगर question बहुत easy है ना, तो ये directly apply करना possible होता है. Yeah, if you end up acing parajumble so much that you don't have to do the above thing and then you end up doing the second thing directly. Because it becomes very easy to start finding how the dimension is different. Either the question is easy or your expertise is really strong. तो ही सेकंड वे होता है जहां पे तुम डायरेक्टली एक ऑड सेंटेंस निकाल पाते हो. अदरवाइज पैराजम्बल वे ऑलवेज हेल्प्स. ठीक है, so this is what the steps of solving odd one out are. And lastly we are going to find the common odd one out traps. ठीक है, हम समझ गए हम ऑड वन आउट कैसे निकालने वाले हैं. हम इधर पैराजम्बल वे जाएंगे या हम ऑड फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे. राइट, कीप दिस इन माइंड. ग्रेट. हाँ, हम either that or this, हम दोनों में से कोई एक मेथड लेंगे. Now, like when we will start doing questions, तब we will choose which of the 2 methods am I going to take up. Okay, but these are the 2 methods and you have to note it. ठीक है, there will always be sentence pairs. pair बन गया तो हमें पता है कि okay. तो by the way, odd one out को solve करने का most popular तरीका जो overall CAT ecosystem में सिखाया जाता है वो होता है by forming pairs. तो सिखाया जाता है by teachers कि you learn कि तुम 2 सेंटेंस का पेयर बनाओ. तो जो सेंटेंस का पेयर बना वो बना, जो छूट गया वो तुम्हारा odd one out. So that is basically doing parajumbles only. जो मैं कह रही थी कि at the end it is about finding pairs, right? But this is also something that we try to eventually ace. So abhi lastly is common traps that you find in odd one outs. So what are the common traps you find? Pehla trap, most famous, most frequent. That is the same topic but different dimension. जो मैंने अभी तुम्हें बोला कि same topic की बात हो रही है, ठीक है? But एकदम slight तरीके से हल्लू से एकदम ऐसे दिल touch different dimension of the topic. ये मैं enough explain कर चुकी हूँ तुमको. So I hope this is self-explanatory, self-understood now. For now, apply करके तो हम जरूर देखेंगे. Now second is example without parent. Example without parent मतलब what will happen is they'll end up giving explanation, justification or example of something without setting the context. And we know कि always it goes broad to narrow. So you cannot end up giving some example without a context, right? So you will need context first, and then only there can be an example. So many a times they don't give context but just give example, and that is a trap. Whenever you feel like ये example है but एक जिस चीज का example है वो तो sentence है ही नहीं मेरे पास, so then you end up saying कि oh, this is a odd one out. This example is the odd one out. Third is premature conclusion. कि probably some argument is building, some thought process, some idea is building, but you suddenly concluded it, right? So whenever conclusion happens, all of a sudden you're like, dude, right now the focus was argument. So probably in this paragraph, the author was only developing an argument, and probably sometime later in the passage, author ended up concluding it. है ना?
तो बात करते करते बाद में कभी कंक्लूड किया होगा, बट ये तो इसी में दे दिया है, तो देन दैट प्रीमेच्योर कंक्लूजन इज आल्सो एन ऑड वन आउट. फोर्थ इज ब्रॉड नैरो फ्लो ब्रेक. वही है, ये एग्जांपल विदाउट पेरेंट्स जैसा ही है कि ब्रॉड नैरो फ्लो ब्रेक मतलब क्या है कि कुछ नैरो बात हो रही है, कुछ स्पेसिफिक बात हो रही है और अचानक कुछ ब्रॉड सेंटेंस बोल दिया, या कुछ ब्रॉडर सेंटेंस की बात हो रही है और अचानक कुछ नैरो एग्जांपल दे दिया. सो दैट सॉर्ट ऑफ फ्लो ब्रेक. एंड लास्ट थिंग इज कीवर्ड ट्रैप, माय फेवरेट. दैट इज कि वो क्या करेंगे, ऑड सेंटेंस में सिमिलर कीवर्ड्स दे देंगे, ठीक है, विच साउंड्स वेरी वेरी सेम, ठीक है, बिकॉज वो वाले वर्ड्स यूज कर लेंगे वो जो बाकी पैराग्राफ्स में है, टॉपिक भी उसी टॉपिक पे कुछ लिख लेना, दो चार वर्ड से सेम सेम डाल देना, एंड वी एंड अप फीलिंग लाइक ओ seems same, okay, keywords match kare, but actually that whatever they're saying is some bhalta thing only, not even from that article, something else only it is, if you look at the overall meaning, but because you're spotting words we end up feeling it's a trap, right? We end up feeling that it is not odd. Okay, so these are 5 kind of traps. I would want you to note these traps in your book right now, so that when the examples come you're able to spot these also. Okay, so these are the 5 kind of traps that you'll usually find in odd man out questions. All right, cool. So this is it about the theory part. इसमें dimension समझना सबसे ज्यादा important था, and from that अभी from here on we will start doing अभी questions. Okay, we will start doing questions now. Are we all good with the theory part? Yes, yes, very good, very good. All right then, next move to questions part. Now we will deal with one question at a time. All right, so let us start solving the odd one out questions. करो ये, take your time, do this, then I'll tell. Okay, all right. किसी और की ओपिनियन नहीं है क्या कुछ? ठीक है, चलो दिस इज आवर फर्स्ट ऑड वन आउट. देखो मैं बताती हूँ कैसे सोचना है, ठीक है, कीप दिस इन माइंड. Let us take the parajumble approach because that is what we know. What we can do is we can start finding independent sentences. Which are the independent sentences? Okay, we are going to do this specific question real slow because it is our first odd one out, and we are going to focus on each and every aspect of how to analyze it. ठीक है, तो सबसे पहले it says no known real researcher of human behavior would say that gender is all nature or all nurture. Independent sentence. वो बोल रहा है ऐसा कोई भी ह्यूमन बिहेवियर का रिसर्चर नहीं है जो बोलता है जेंडर इज ऑल नेचर और ऑल नर्चर. ऑल नेचर और ऑल नर्चर मतलब नेचर मतलब क्या, बायोलॉजिकली जैसे मिला वैसे. नर्चर इज सोशल कंडीशनिंग कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ यू आर नर्चर्ड. तुमको लड़के की तरह पाला है, तुम्हें लड़की की तरह पाला है, उससे तुम्हारा जेंडर आइडेंटिफिकेशन या जेंडर डिटरमाइन होता है ना, जिस तरीके से तुम्हें नर्चर करा गया. तो बोल रहे हैं ऐसा कोई रियल रिसर्चर नहीं है जो बोलेगा कि नहीं जेंडर इज एंटायरली नेचर बायोलॉजिकल, या बोलेगा नहीं जेंडर इज एंटायरली नर्चर. ऐसा कोई भी नहीं है जो दोनों में से एक साइड लेता है. ठीक है, ये बोला. तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंटली मेकिंग सेंस ऑन इट्स ओन. सेकंड सेज the evidence for the biological basis of gender certainly doesn't mean there's a evidence कुछ एग्जांपल होगा वो जो बोलता है कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ जेंडर, कि जेंडर बायोलॉजिकली डिसाइडेड होता है. certainly doesn't mean, ठीक है, इसके लिए अगर हमारे पास एग्जांपल है, इट डजंट मीन दैट वी शुड बी कंप्लेसेंट इन द फेस ऑफ सेक्सिज्म. इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेक्सिज्म झेल ले. ठीक है, कंप्लेसेंट होने का मतलब क्या होता है, यू आर लीनिएंट विद समथिंग. सो इट डजंट मीन यू आर कंप्लेसेंट इन द फेस ऑफ सेक्सिज्म. अब इफ यू ट्राई टू रिलेट दीज टू सेंटेंसेस, तुम्हें ये रिलेटेड लग रहे हैं कि अनरिलेटेड लग रहे हैं? बताओ, ये दो सेंटेंसेस तुम्हें रिलेटेड लग रहा है कि अनरिलेटेड लग रहा है? ओके, रिलेटेड. किसी को लग रहा है अनरिलेटेड? अनरिलेटेड. और बाकी लोग ओपिनियंस, आई वांट ओपिनियंस. ओके, रिलेटेड. सो होल पॉइंट इज 50-50% वोट कि अनरिलेटेड लग रहा है, किसी को रिलेटेड लग रहा है. नाउ लेट अस स्टार्ट. अभी मैं तुमको डायरेक्टली नहीं बताना चाहती वेदर इट इज रिलेटेड और नॉट. लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट. ठीक है, पूरे सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, देन आई हेल्प यू डेवलप दिस थॉट प्रोसेस फॉर इट. ठीक है, सो यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा कोई ह्यूमन बिहेवियर का रिसर्चर नहीं है जो बोलेगा कि जेंडर पूरा पूरा बायोलॉजिकल है या पूरा पूरा हमारे अपब्रिंगिंग से और हमें कैसे नर्चर किया उससे रिलेटेड है. ऐसा कोई नहीं बोलता. मतलब मोस्ट लोग ये बोलते हैं कि दोनों का मिक्सचर होगा, लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. फिर सेकंड कहता है कि अगर हमारे पास एविडेंस है कि जेंडर बायोलॉजिकली बना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सेक्सिज्म झेल ले. ठीक है, तो नाउ ओके चलो. थर्ड सेंटेंस इज मेनी पीपल आर अनकंफर्टेबल विद द आइडिया दैट जेंडर इज नॉट प्योरली सोशल कंस्ट्रक्ट. काफी सारे लोग इस आइडिया से बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि जेंडर कंप्लीटली एक सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है. काफी लोग इस आइडिया से वो हो जाते हैं अनकंफर्टेबल कि जेंडर प्योरली सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है. इससे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. अब ये सेंटेंस तुम्हें रिलेटेड लग रहा है क्या? आर यू थिंकिंग इट इज रिलेटेड टू वन और टू?
And does it feel related to, even if it is feeling related, is it feeling related to one more or two more? किससे related लग रहा है? Okay, okay. और I'm looking at answers. हाँ, good, good. किससे रिलेटेड लग रहा है? वन से रिलेटेड लग रहा है, बिकॉज अभी अभी हम बात कर रहे थे कि जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है, नेचर से कि नर्चर से, राइट? हाउ इज नेचर डिटरमाइंड? इज इट ऑल नेचर और इज इट ऑल नर्चर? एंड देन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सेम आइडिया ऑफ जेंडर बीइंग अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब ऑल नर्चर एंड नॉट नेचर, ठीक है? तो लाइक दैट, ठीक है? अब इसके आगे क्या बोला है? डिस्पाइट दिस एम्पेरिकल ट्रुथ, we don't know which empirical truth, this empirical truth, researchers who study biological basis of gender, researchers, अभी somewhere researchers are coming back, but हम keyword trap में नहीं फंसेंगे ना. But here they're talking about researchers who study biological, मतलब nature, all nature part of gender, often face political pushback. उनको political pushback मिलता है. जो biological basis of gender देख रहे हैं, वो उनको political pushback मिलता है. क्या political pushback मिलता है? There's a political preference for gender to be only reflection of social factors and not so entirely malleable. क्या एक political preference है? देखो pushback मिलता है. जो लोग biologically study करते हैं gender को, उनको मिलता है pushback because political चीज ये कहना चाहिए कि जेंडर सोशल फैक्टर्स का ही रिफ्लेक्शन है और टोटली सो एंटायरली मैलिएबल. मैलिएबल मतलब क्या? कि इट कैन चेंज, ठीक है? तो होल पॉइंट बीइंग कि इफ यू लुक एट दिस, स्टार्ट लुकिंग एट दिस पैराग्राफ नाउ, you will realize that all these sentences are at the end about how is gender determined. Is gender biological or is gender social? ठीक है? If you look at the essence of all of these paragraphs, हम independent sentence के हिसाब से जाए, so we end up knowing कि first sentence seems independent, ठीक है? And that is it, ठीक है? और फिर many people are uncomfortable with the idea is not purely social construct, ठीक है? ये भी दो, but first sentence is more independent in its sense, right? और अगर हम उस sentence का one भी है, two भी है, by the way, but when we start connecting pairs and when we start understanding the paragraph, if we go by the odd framework method actually, तो भी realize होगा कि what is the topic at the end of it? What is the topic? Odd framework के हिसाब से what is the topic? The topic at the end is what? He is your gender, gender subject लग रहा है और हर जगह देखो बात आ रही है gender biological, gender social, gender social, gender is social और biological, right? और यहाँ पे भी बात आ रही है biological gender. So definitely paragraph is definitely about gender being biological slash social. इसकी बात तो है, हमने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया. अब लेट अस स्टार्ट लुकिंग एट द डायमेंशन ऑफ कन्वर्सेशन. सो डायमेंशन ऑफ कन्वर्सेशन की अगर हम बात करें तो क्या कह दिया है हमको? हमको ये दिया है कि कोई रिसर्चर नहीं कहता कि इट इज ईदर ऑफ द टू, प्रॉब्ली रिसर्चर इज सेइंग इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है? फिर यहाँ पे दिया है कि पीपल आर अनकंफर्टेबल विद वन ऑफ दीज आइडियाज, ठीक है? एंड देन सेंटेंस नंबर 4 ends up saying कि the researchers, whatever researchers say, politically it is not accepted properly, right? That there's a political preference to gender being in a certain format. So all of these sentences are either talking about the acceptance or non-acceptance of gender being either biological or social. And a debate sort of thing कि एक party सोचती it's a combination of two, एक party सोचती नहीं it is just social, other people want to think that it is just biological, right? But if you look at sentence number 2 changes the perspective. Sentence number 2 says कि there's a evidence of biological basis of gender. जहां तक हमको लग रहा है it is the same, but then सेम टॉपिक लग रहा है हमको, ठीक है? सेम टॉपिक ही है, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर, बट तुरंत दे आर टचिंग अ डिफरेंट डायमेंशन कि हाउ इट इज रिलेटेड टू सेक्सिज्म, राइट? हाउ इट इज रिलेटेड टू सेक्सिज्म, एंड सेक्सिज्म इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. सेक्सिज्म इज व्हाट? तुम सेक्स के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हो, राइट? कि इफ यू आर अ गर्ल और इफ यू आर अ बॉय. बट यहाँ पे गर्ल वर्सेस बॉय या हाउ डिफरेंट जेंडर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली उसकी बात नहीं हो रही है. यहाँ पे जेंडर डिटर्मिनेशन की बात हो रही है कि हाउ इज जेंडर डिटरमाइंड, इज इट अ सोशल थिंग और इज इट अ बायोलॉजिकल थिंग. तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ आवर फर्स्ट ट्रैप जो मैं तुम्हें कह रही थी. फर्स्ट ट्रैप क्या है? इट्स सेम टॉपिक, हर जगह तुमने देखा टॉपिक वाज सेम, राइट? बट डिफरेंट डायमेंशन. वेयर सेंटेंस 1, 3, 4, 5 टॉक अबाउट इसी टॉपिक के बारे में, टॉक अबाउट दिस और दैट,
which people think it is biological, which people think it is social, and how are these two ideas accepted. While sentence 2 is talking about how it has an impact or it's related to sexism. Okay, so this is a different. So this is the same topic but different argument, same topic but different dimension, and this is the trap that we are talking most commonly found trap. So what is odd one out at the end of it? What is the odd one out? The answer is. Do we have clarity on this now? कैसे सोचा? Did you see how I built it? Yes or no? Yes. So this is how we have to build it. It's okay if it ends up taking a lot of time because we are just starting up. But eventually, तुम जब पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते तुम्हें पता चल जाएगा. At one point, you will be at the stage where I am, where I like first और second sentence देखते ही पता चलता है कि ये दोनों तो अलग अलग dimensions है. तो dimensions identify करना जरूरी है, जहाँ तुम्हें समझ जाए कि बात क्या हो रही है. तो यहाँ पे एक research oriented how gender is perceived की बात हो रही थी. और second sentence में जैसे भी gender perceive होता है, उसका implication क्या है. और सेक्सिज्म वाज द हाईलाइट ऑफ दैट सेंटेंस एंड उसी मोमेंट पे पता चल जाता है ये दोनों अनरिलेटेड है. तो ये दोनों अनरिलेटेड है तो इन दोनों में से एक ऑड वन आउट है. बाकी 3 सेंटेंसेस पे डिपेंड करेगा कि वो इससे ज्यादा रिलेटेड है कि इससे ज्यादा रिलेटेड है. उससे हमें तुरंत पता चल गया. अगर हम फॉर्मिंग ऑफ पेयर्स वाला अगर हम सिचुएशन देखें तो 4 and 5 डेफिनेटली फॉर्म अ पेयर बिकॉज पॉलिटिकल पुशबैक, पॉलिटिकल प्रेफरेंस, राइट. एंड देन 1 and 3 कैन आल्सो फॉर्म अ पेयर. तो इस तरीके से भी तुम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ठीक है, मल्टीपल वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन. चलो अब इसके बेसिस पे कीप दैट इन माइंड एंड डू दिस क्वेश्चन नाउ. गिव इट टाइम एंड रीड. When you start looking at things like that, it rather becomes easy, right? तो जो odd one out तुमको tough लग रहा था वो कैसा easy बन जाता है the moment you start looking at it like this. चलो let's do second one. यहाँ क्या बोला है? यहाँ क्या बोला है? Very good, very good. Very good. I'm seeing all of your answers and you have caught on to the concept really well, right? Very good. तो इसी को देखना है. Start looking from dimension perspective. Start looking from pairing of the two sentences perspective. Start looking from independent sentence and constructing the para jumble sort of perspective. दोनों तीनों perspective का mixture डालना है, but the core of it is always a different dimension. So the first sentence is definitely context setting है काफी तरीके से कि although we are born with the gift of language, research shows that we are surprisingly unskilled when it comes to communicating with others. This is definitely a broad context setting sentence. कि हमको language का गिफ्ट बोलने के मिलने के बाद भी we are really bad at communicating. ठीक है? Then, if you look at it, sentence 3 and 4 are definitely pairs. Sentence 5 is also on the same lines. 3, 4, 5 कितने एक दूसरे से जुड़े हैं देखो. यहाँ बोला है, we often choose our words without thought. Oblivious. We do not pay attention to the emotional effect it can have on others. We talk more than we need to, ignoring the effect it has on the people who are listening to us. सेम बात है. 3 और 4 तो लिटरली एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है कि हम ऐसे वर्ड सोचते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसका दूसरे पे इम्पैक्ट क्या होगा. हम बात करते रहते हैं एंड हम इग्नोर कर देते हैं कि सामने वाले जो अपने भी सुन रहा है उसको क्या लग रहा है. ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो अभी 3 और 4 तो एक जैसे हो गए. 5th इन सेंस रेपिटेशन ऑफ आइडिया कि हम अच्छे से सुनते नहीं है और जो दूसरे के बॉडी लैंग्वेज में या उनके टोन में वगैरह जो डिफरेंस है या whatever, so we are not able to read between the lines. So again, we are talking about how we are unskilled at communicating with others. So all of these sentences are talking about how unskilled we are in communication, about how we do not choose words with proper thought, how we talk more than we need to, and how we do not listen properly. All are different dimensions of being unskilled at communication, right? So all of these are talking about the problem. 1, 3, 4, 5 are talking about the problem. The problem that what is the topic? हमको topic समझ गया. Topic क्या है? Topic is communication. Problem with communication, right? How we are ineffective communication is a topic. We are talking about how we are bad at communicating. And all of these sentences are talking exactly that, listing the problems more and more and more. While sentence 2 ends up giving the solution to it. कि हमने इसीलिए the solution is कि हमने हमारी speech is properly करनी चाहिए. So it is a solution पहली बात. That is the first thing that it is a solution. And the second problem with it is कि all other sentences देखो ये तो neutral है, ये तो context setting sentence है. तो ये 2 को भी मैच कर पाता या 3, 4, 5 को भी मैच कर पाता. ये sentence किसी को भी मैच कर पाता. But 3, 4, 5 are talking about the emotional side of it, not being able to understand somebody, not being able to empathize with somebody. Well, this is talking about goals and dreams. So again, a different dimension. Ki all of the sentences are talking about the emotional effects of it. While 2
ये तुम्हारे context setting sentence है. All of these are talking about, one is neutral, but all others are talking about एक तो problem, and that too emotional problem, while the second is talking about सबसे पहले solution, and that too solution for practical, for goals and dreams and all of that. And that is why 2 is your odd one. This was a classic example. What was the trap here? The trap was premature conclusion. तुम्हें एक सोल्यूशन दे दिया ना उन्होंने, सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं थी. अब तक हमारा आर्ग्यूमेंट किस बारे में था? प्रॉब्लम्स के बारे में था. सो दिस पैसेज वाज प्रॉब्ली अबाउट प्रॉब्लम्स. फिर उसको डेवलप करते करते तीसरे चौथे पैराग्राफ में शायद ऑथर लिख देता सोल्यूशन क्या है, राइट? So there are two types of problems with it. One, it is a solution, and second, it is talking about practical stuff and not the emotional stuff. Okay, that is why 2 is very good. Chalo, let's do third question. Come on, come on. This is rather easy. Literally, the answer is on your face. Yes. Yes. Keep it simple, you'll find the answer. Just keep it simple. Don't overanalyze. It's right there on your face. Good. So, what do we understand here? All these sentences. What is the topic here? Observe the topic. What is the topic? The topic is sleep tracking apps. If you realize, the topic is sleep tracking apps and not sleep in general, right? So here, ये ना flow break वाला जो trap है ना वो है. Flow break trap मतलब we are talking about something really narrow. या इसको तुम okay. So we're talking about something really narrow and अचानक third sentence talks about sleep in general. We're talking about something narrow मतलब we're talking about sleep tracking apps, while sentence 3 ends up talking about sleep as a whole. है ना? देखो, out of all the errors, there is no conclusion happening here. So it's not premature conclusion. It is not keyword trap. It is not your this thing also. क्या बोलते हैं? Same topic, different dimension. Because in third sentence, the topic is also different. The topic is also not sleep tracking apps, right? Third में है ही नहीं. Keywords भी same नहीं है. So it is a flow break. Flow break मतलब क्या? कि we're talking about something specific and अचानक there is this sentence talking about something else which is much broader in the sense. How do you start identifying it? Simple बात है. यहाँ पे देखो. Smartphones can now track our diets, whatever, and sleep patterns. Smartphones can track all of these things. इसका context setting sentence है sentence number 5 है by the way. ये पैराजम्बल में सबसे पहले फिफ्थ सेंटेंस आएगा. A new threat to good night sleeps, good night's rest has emerged. Smartphones with sleep has emerged. Smartphones with sleep tracking apps. हमारे गुड नाइट स्लीप को एक नया थ्रेट मिल चुका है, वो है स्मार्टफोन. ऐसे स्मार्टफोन जो स्लीप ट्रैकिंग एप्स के साथ आते हैं. ठीक है, सेंटेंस नंबर 5. What do they do? The smartphones can now track our diet, biological cycles, digestive system, and even sleep tracking patterns. Okay? Now, why do people use it? The existence of such apps is unsurprising because of all of these things, right? And the researchers have also given a name to it called as orthosomnia. कि when you pay too much attention to smartphones and sleep tracking apps, उसके कारण जब तुम सो नहीं पा रहे हो. So everything is talking about a threat to good night sleep in form of the sleep tracking apps, which can do this and that, and then researchers have coined a term, so on and so forth. While third sentence actually talks about sleep is what and how it is disturbed by earthly worries and guilty consonants. So now it seems like it means the same thing. It seems like it is on the same lines, but it is disturbed. In all 4 sentences, they are saying it is disturbed. Sleep is disturbed, right? But it is disturbed by what? It is disturbed by smartphones and sleep tracking apps and too much work and all of that. But when you call this as earthly worries or guilty conscience, तो ये सारी चीजें है ना, ये फिर you're talking about a broader thing, right? कि this comes under earthly worries. हमारा काम कारण और overthinking, ये सब earthly worries है. But that's a much broader thing set. So the topic here is sleep tracking apps, or if somebody apps की topic here is disturbances to sleep. In either of the topics, at the end, the flow is broken because all other sentences, 1, 2, 4, 5, talk about a very narrow perspective,
That is disturbance to sleep caused by smartphones and the apps. While 3 suddenly talks about something too broad of a thing, which is earthly worries. It's very broad a term, right? And that is why your odd one out is 3. Understood? Why? नो कंफ्यूजन हियर, राइट? आंसर निकल ही गया था मोस्टली सबका, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ अलग ही बात कर रहे हैं अर्थली वाली, जबकि बात पूरी भाई सिंपल सिंपल स्मार्टफोन्स की हो रही थी. डू वी अंडरस्टैंड टिल हियर? आर वी गुड सो फार?